मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। द प्लांट ऑर्गन दैट इज डिवोटेड ऑफ क्लोरोफिल्स बड एंड लीव, जिसके अंदर जो है क्लोरोफिल हो, बड हो और लीव्स हो। इट शो पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म्स एंड मूव अवे फ्रॉम द लाइट। ये जो है पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म्स को शो करता है और मूव करते हैं अवे फ्रॉम द लाइट, मतलब ज़मीन के अंदर इसकी मूवमेंट होती है। रूट कैप इज़ प्रेजेंट एट द टिप, टिप के ऊपर रूट कैप मौजूद है। फाइन्स डेलिकेट रूट हेयर्स आर प्रेजेंट फॉर द वाटर अब्जॉर्प्शन। फाइन और डेलिकेट जो रूट हेयर्स हैं, छोटे छोटे रूट हेयर्स जो हैं मौजूद हैं पानी के अब्जॉर्प्शंस के लिए। काइंड ऑफ रूट्स, टाइप रूट्स हैं और एडवेंटिशियस रूट हैं। द फर्स्ट रूट दैट इज फॉर्म्ड बाय द elongations ऑफ द रेडिकल्स ऑफ द एम्ब्रियो। जो फर्स्ट रूट है वो फॉर्म्ड होता है बाय द elongations जो है रेडिकल्स ऑफ द एम्ब्रियो। इन द सीड्स इज कॉल्ड, सीड को कहा जाता है टैप रूट। एडवेंटिशियस रूट, रूट विच अरोज फ्रॉम द स्टेम्स लीव्स एंड देन अदर देन रेडिकल्स पार्ट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। जो स्टेम्स और लीव्स पे रूट फॉर्म होती हैं उन्हें एडवेंटिशियस रूट्स का नाम दिया जाता है। फॉर्म्स ऑफ टैप रूट, टैप रूट की कितनी फॉर्म्स हैं? टैप रूट ब्रांच रूट फॉर्म में भी है और टैप रूट सिस्टम्स। Fibrous taproot in herbaceous annuals plants such as beans and pea. Herbaceous annuals plant जैसे कि beans और pea, taproot जो है elongated and give off branches। taproot जो है elongated होती है और give off करती हैं branches। Long and slender taproot is called fibrous। long और slender taproot जो है उसे कहा जाता है fibrous। Nodulated root in medica ego, the taproot bears small swellings। taproot जो है bear करती हैं small swellings और nodules। These bacteria fix nitrogen and form nitrate। ये जो बैक्टीरिया हैं ये फिक्स होते हैं नाइट्रोजन के साथ और फॉर्म करते हैं nitrates। These bacteria provide nitrate to plant and in return get protections and shelter from root। और ये प्रोटेक्शन और शेल्टर देते हैं रूट का। टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, ये लाइफ साइकिल्स है उसका। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्यूबरस टाइप रूट की जानिब। When the tap roots are thick and store reserve food, जब टैप रूट थिक और स्टोर करे रिजर्व फूड, दे आर कॉल्ड एज ट्यूबरस रूट। इसे कहा जाता है ट्यूबरस रूट। अक्कर्स इन बैनुअल्स प्लांट, अक्कर होते हैं बैनुअल प्लांट। एग्जाम्पल्स कैरोटा, रेडिश, टर्निप एंड बीट ऑक डैंडलाइंस। इसे कहा जाता है बीट ऑक एंड DNDLIO डैंडलाइंस। बैनुअल्स रूट जो दो मौसमों में हों प्लांट्स। दिस प्लांट्स लीव्स फॉर 2 सीजन, ये प्लांट्स रहते हैं 2 सीज़न में। इन द फर्स्ट सीजन दे प्रोड्यूस लीव्स ओनली, ये जो है प्रोड्यूस करते हैं लीव्स ओनली और स्टोर अप द सल्फर फूड, और स्टोर अप करते हैं सल्फर फूड इन द टैप रूट में। इन द नेक्स्ट सीजन दे आर यूज दैट स्टोर फूड फॉर फ्लावर प्रोडक्शन, स्टोर करते हैं फ्लावर की प्रोडक्शंस आफ्टर दे डाई, उसके बाद ये मर जाते हैं। कॉनिकल टैप रूट, इट इज़ साइलेंस फ्रॉम द टॉप एंड टैपरिंग फ्रॉम द एंड। इंग्लिश रेडिश एंड इंग्लिश कैरोटा। Napiforms taproot, this type of root is very much swollen form. The taps and abruptly tapers from the lower side, for example turnip and beets। एडवेंटिशियस रूट, जिसके ऊपर लीव्स और स्टेम्स के ऊपर रूट्स मौजूद हों। उसके बाद वेरियस फॉर्म ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स आर प्रेजेंट, सब ट्रेनिया एंड अंडरग्राउंड एडवेंटिशियस रूट, पार्शली सबट्रेनिया एडवेंटिशियस रूट, एरियल्स रूट, पैरासिटिक्स रूट एंड एक्वेटिक रूट्स। उसके बाद सबट्रेनिया और अंडरग्राउंड एडवेंटिशियस रूट, दे अरोज फ्रॉम द पार्ट ऑफ स्टेम्स, ये अरोज होते हैं पार्ट ऑफ स्टेम विच इज़ इन द
contact with the soils, ये contact होते हैं soils के, they may be of fibrous or adventitious types. Fibrous adventitious root, they are long and cylinders, commonly clippings on underground stems. ये long cylinders हैं और commonly clippings करते हैं underground stems. Grasses, gingers, tuberous adventitious root, they are swollen and fleshy. Containing stored food, contain करते हैं stored food, they are present in dalia, sweet potato and many orchid. In dalia and sweet potato, some root remains fibrous whilst other enlarge greatly to form tubers. Partly substance adventitious root, they are present partly above or partly below the ground, partly above or partly below the ground के, they may be classified into stellate root, prop root and aerating root. Stellate root, when the root arise from the lower portions of the stems, root arise होते हैं lower portion जो है stems का, and grow obliquely down into the soils where they develop in the normal manner. They are called slit root. They fix the plant firmly in soils and keep it erect. Example maize, sugar cane and bamboo palms. उसके बाद prop root, these roots grow vertically downward in the areas from which they absorb moisture. On reaching the soil, they absorb water and mineral from it. After this, they behave as storators and form prop and pillars which support the branch. Banyan tree, Fucus bengalinus, and rubber tree, Fucus elasticus. Pneumatophores root, aerating root. Such roots are found in plant growing and mangroves or swamps near and seashores. Pneumatophores rise vertically upward and come out of soils and waters. They bear small spores called pneumatophores or lenticles for exchange of gases. For example, Heritiria. Aerials root, they are exposed to airs and carry specific functions. They are of two types, clangings or clampings root, absorbing root. उसके बाद clangings और clampings root, they are developed from stems. They are sensitive to touch and sport. Sensitive and touch और sport के लिए they secrete fluids, and when they are exposed to air, exposed होते हैं हवा में, they that dries up help plant to sport. Sometimes they form disc-like structure to ensure the frame attachment with the host. Absorbing root, they are present in epiphytes in tropical rainforests. उसके बाद they have long adventitious root which hang freely in airs and absorb moisture from air. These roots are covered by dead spongy tissue called as vehements. That absorb and store water. Absorb or store करते हैं water. Parasitic root, in parasitic flowering plants, various root arose from the stems of the plants where it is nearer to its host. They are also called as hestrua. They penetrate into the stems and become connected with it, conducting tissue. They absorb manufacturing foods from the host and pass it to the stems of parasitic plant cascuta. Aquatic root, in many water plants, clusters of fibrous fibros, fibrous adventitious root arise from the stems and dangly swings in waters. They are usually without root hairs. Functions of root: ensuring absorbing storage. Ensure करते absorb करते storage करते clanging
propping and absorption as has true. उसके बाद इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं दहलिया प्लांट इट स्टोर्स एक्सेस फूड एंड सर्व्स एज सोर्स इन नेक्स्ट सीजन सोर्स करते नेक्स्ट सीजन डेवलप बर्ड एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स